Taking large strides towards becoming self-reliant in the field of green energy, Prime Minister Modi inaugurated the Green Mobility Initiatives in Hansalpur, Gujarat. Prime Minister underlined that the day was also a tribute to India-Japan friendship, recalling his 2012 decision as Gujarat Chief Minister to allot land to Maruti Suzuki in Hansalpur. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Green Mobility Initiatives at Hansalpur in Gujarat in a landmark moment for India's green mobility journey. The event marked the global launch of Suzuki's first made-in-India strategic battery electric vehicle, the e-Vitara, and the commencement of hybrid battery electrode manufacturing in the country. Prime Minister Modi called it a giant leap towards making India a global hub for electric vehicles and clean energy innovation. आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। Prime Minister Narendra Modi also inaugurated the local production of hybrid battery electrodes at the TDS lithium-ion battery plant, a joint venture between Toshiba, Denso and Suzuki. This development ensures that over 80% of the battery value will now be manufactured within India, strengthening the country's self-reliance in clean energy solutions. भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति भी सजग है। इस दिशा में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है। इसके तहत देश में अलग अलग जगह पर 1200 से अधिक खोजी अभियान चलाए जाएंगे, क्रिटिकल मिनरल्स को तलाशा जाएगा। Prime Minister Modi also highlighted the growing trust between India and Japan, recalling that the seeds of this success were sown 12 years ago when land was allotted to Maruti Suzuki in Hansalpur. सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। Prime Minister Modi highlighted India's rapidly advancing semiconductor sector, announcing that 6 new plants are set to be established soon. With the launch of e-Vitara and domestic battery electrode production, India has taken a decisive step towards becoming a global leader in electric mobility. It's a giant leap towards ensuring that the world will soon drive EVs that carry the stamp of Made in India. Meghna Dev for DD India. Prime Minister Narendra Modi is all set to embark on a 4-day visit to Japan and China from August. Taking large strides towards becoming self-reliant in the field of green energy, Prime Minister Modi inaugurated the Green Mobility Initiatives in Hansalpur, Gujarat. Prime Minister underlined that the day was also a tribute to India-Japan friendship, recalling his 2012 decision as Gujarat Chief Minister to allot land to Maruti Suzuki in Hansalpur. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Green Mobility Initiatives at Hansalpur in Gujarat in a landmark moment for India's green mobility journey. The event marked the global launch of Suzuki's first made-in-India strategic battery electric vehicle, the e-Vitara, and the commencement of hybrid battery electrode manufacturing in the country. Prime Minister Modi called it a giant leap towards making India a global hub for electric vehicles and clean energy innovation. आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के
दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। Prime Minister Narendra Modi also inaugurated the local production of hybrid battery electrodes at the TDS lithium-ion battery plant, a joint venture between Toshiba, Denso and Suzuki. This development ensures that over 80% of the battery value will now be manufactured within India, strengthening the country's self-reliance in clean energy solutions. भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति भी सजग है। इस दिशा में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है। इसके तहत देश में अलग अलग जगहों पर 1200 से अधिक खोजी अभियान चलाए जाएंगे, क्रिटिकल मिनरल्स को तलाशा जाएगा। Prime Minister Modi also highlighted the growing trust between India and Japan, recalling that the seeds of this success were sown 12 years ago when land was allotted to Maruti Suzuki in Hansalpur. सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। Prime Minister Modi highlighted India's rapidly advancing semiconductor sector, announcing that 6 new plants are set to be established soon. With the launch of eVitara and domestic battery electrode production, India has taken a decisive step towards becoming a global leader in electric mobility. It's a giant leap towards ensuring that the world will soon drive EVs that carry the stamp of Made in India. Meghna Dev for DD India.